Hi folks, welcome to Cambridge Tutorials. Today we're going to see conversation in English. आज हम लोग इंग्लिश के अंदर देखेंगे conversation. Conversation official. What do you mean by conversation official? अब conversation official का मतलब क्या होता है? ऐसा conversation जो हम लोग offices वगैरह में करते हैं. For example, suppose you're going to an airport. Suppose you're going to post passport office, any clerk, in school, college, hospital, any type office you're going, any type office, at that time you can have this conversation. आप कोई भी तरह के ऑफिस में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का ऑफिस है, पैन कार्ड का ऑफिस है, कुछ और भी ऑफिस हो सकता है, वहां पर आपको ऐसा कॉन्वर्सेशन देखने को और करने को मिल सकता है. फॉर एग्जांपल, दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन द क्लर्क एंड द स्टूडेंट. ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आप लोग कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक स्टूडेंट और एक क्लर्क के बीच में है, जो कि स्टूडेंट बोनाफाइड लेने गया है, या तो फिर ये कॉन्वर्सेशन आधार कार्ड बनाने वाला, पासपोर्ट बनाने वाला, उसके और कैंडिडेट के बीच में है. लेट्स स्टार्ट दिस. नाउ एज विल गो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू विश द पर्सन. जब हम लोग जाएंगे उसके बाद में हम लोग तुम विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, और अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से हम लोग वो इंसान को वहां पर विश कर सकते हैं. नेक्स्ट द पर्सन विल बी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू यू. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, वो आपको पूछना स्टार्ट करेगा कुछ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. Or you can ask such questions to the person and they can answer you. For example, what's your name? So you're going to talk about your name. For example, I'm Ansār Idrīsi, I'm David Watson, I'm Peter Smith, etc. Next one, what's your birth date? Usko birth date nahi bolna hai, that's what birth date. Alright, what's your birth date? So the person can ask you about your birth date. So birth date आप लोग अपनी बता सकते हैं. For example, August 28, 1994. You can talk about your birth date like August 28, 1994 or 28 August 1994. So this is what you can share your birthday. यहाँ पे मैंने मेरी birth date लिखा हूँ, आप आपकी birth date बोल सकते हैं वहाँ पर. Next one, how much do you weigh? मतलब यानी आपका वजन कितना है. So the person can ask you about how much do you weigh. Suppose for example you are going to hospital. Hospital में आपको पूछ सकता है question. Means I have just mixed up the question. अब जरूरी नहीं कि ये पूरा conversation आपको आधार कार्ड के ऑफिस में करना है या फिर पासपोर्ट ऑफिस में करना है. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग अलग भी रखा हूँ. So which are absolutely official questions. All right. For example, how much do you weigh? मतलब आपका वजन कितना है. So you can talk about your weight. For example, I'm 50 kilos, 60 kilos, 80 kilos, 95 kilos, etc. Next one. So the next question is, where were you born? मतलब यानी आप कहाँ पैदा हुए थे. Where were you born? So you are going to talk about the city where were you born. For example, I can say I was born in Pune. मैं पुणे में पैदा हुआ था. So you can talk about the city where were you born. Where were you born? उसको where नहीं बोलना है. Where were you born? So मतलब आप कहाँ पैदा हुए थे. Next is, how tall are you? Means what, you're going to talk about your height. For example, the person can ask you what's your height and how tall are you. So आप आपकी height बता सकते हैं. For example, I'm 5'6", or in American style you can say I'm 1.70 m tall. All right. So that's what I'm 5'6". मतलब मेरी मैं 5'6" इंच का हूँ तो इंच बोलने की जरूरत नहीं है. So you can say directly I'm 5'6", I'm 5'8", I'm 5'9", etc. So the person can ask you about your height, how tall are you, and you can answer him in such way. I'm 5'8", I'm 5'6", whatever. Next one, where do you live? What do you mean by this? Where do you live? अब मतलब यानी आप कहाँ रहते हैं. Now there is a huge difference between live and stay. Live and stay. For example, stay होता है temporarily रहने के लिए बोलते हैं हम लोग stay, और live होता है permanent रहने के लिए. Now many of the people are committing the same mistake over here and they ask you, where do you stay? Where do you stay? Where do you stay? मुझे भी लोग पूछते हैं, where do you stay? Actually they must ask you, where do you reside or where do you live? For example, stay मतलब यानी tonight I'm staying at this hotel. आज रात में ये होटल पे रुकने वाला हूँ. Yesterday I stayed at my friends. कल मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका था. तो टेम्पररी रुकने को हम लोग स्टे बोलेंगे एंड लिव फॉर लॉन्ग टाइम. गेटिंग इट? सो वी कैन आस्क द पर्सन वेयर डू यू लिव. सो द पर्सन विल बी टॉकिंग अबाउट हिज सिटी. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पुणे. हमको हमारे होम टाउन के बारे में बात करना है. दैट्स व्हाट, आई लिव इन पुणे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है. सो वी कैन से देयर I'm pursuing graduation in science, commerce, arts, computers, etc. Or you can say I have done matriculation. अगर आपने 10वीं की है तो, class 10 अगर आपने किया है तो आप बोल सकते हैं I have done
matriculation. अगर आपने क्लास 12 किया है, इंटर जिसको आप लोग बोलते हैं 12वीं, तो आप लोग बोल सकते हैं I have done junior college. For example, you can say I'm a commerce graduate, I'm an arts graduate, I'm a computer graduate, I'm a science graduate, etc. Or you can say I have done masters in English, I have done masters in computer applications, I have done masters in commerce, I have done masters in arts, etc. according to your qualification. Next one comes with your residence. Now what do you mean by residence? मतलब यानी जहां पे आप लोग रहते हैं, आपकी locality. For example, where is your residence? So the person can answer Brighton Road, MG Road, Brighton Road. So this is what you can talk about your residence. तो आपकी जो locally, for example, city के अंदर जो जगह जहां पर आप लोग रहते हैं, आपको वो बोलना है. I reside in Brighton Road. I live, oh sorry, my residence is Brighton Road, MG Road, etc. Next one, what's your designation? Designation का मतलब होता है post. अभी से 10 साल के बाद में आप लोग क्या रहेंगे? Student तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे आप लोग. Yes or no? Doctor, teacher, lawyer, engineer, inspector. So you can talk about your designation. For example, the person is asking, what's your designation? So you can answer him, I'm a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ. And at the end, the person जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों को या फिर आपकी डिटेल ले रहा था, वो आपको बोल सकता है थैंक यू. सो यू कैन गिव देयर डायलॉग, माय ड्यूटी माय प्लेजर, माय ड्यूटी माय प्लेजर. आपको अपना काम निकलवा कर लेना है कि नहीं उससे, सो आपको वहां पर उसकी बोलना पड़ेगा माय ड्यूटी माय प्लेजर. इसमें मेरी खुशी थी और यही मेरी कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है. All right, so this is what conversation official. You can add some more other questions too. जरूरी नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, आप कुछ और भी क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what's your phone number, what's your Aadhaar card number, what's your PAN card number, what's your driving license number, or many other things, what's your flat number and all. So you can add some more other questions just to extend the conversation. So you have to use your brain just to make good conversation. All right, thank you.